We will start our economics class from today. तब मन रख जे आमे नेक्स्ट वीक रू एवरी वीक मु 3टा इकोनॉमिक्स क्लास नेबी तमे केही क्लास मिस करनी कारण थरे गोटे क्लास मिस करी गले तमरो कंटिन्यूटी रहिबनी माने इकोनॉमिक्स इज नॉट लाइक हिस्ट्री जे औरंगजेबटा नले परे बुझु दबो सिमते नाही से थरे माने तमे मिस करी गले तमे जेहेतु तुम माने इकोनॉमिक्स स्टूडेंट नुह you will have difficulty. I want to share with all of you. तुम बहुत difficult हवो. It is a technical subject. Are you getting my point? Technical subject, and apart from subject रे उटा soundness छड़ा, तुम कोटा सब level रे तुम दरकार हवो. Main रे दरकार हवो, interview रे दरकार हवो. हमर अनेक पिला जो interview रे थरा पाई चंती, सेमन को अनेक difficult economics question पचरा हिच. So my personal particular मु भी देखी ची माने मु अनेक पिलां को गाइड करची मध्ये आईएएस पे पूरा काम्या मिश्रा आईपीएस अच्छी पार्टनर अच्छी सो से पॉलिटिकल साइंस रे फर्स्ट क्लास फर्स्ट हेतला किंतु मो संगे 2 मास रहला बोली से सब बटे एबे भी फोन करी कहबो एसपी अच्छी जे सर आपन को जको मु आईपीएस ता पाइली कारण से इकोनॉमिक्स ता तबे जिते भलो स्टूडेंट हेता सब्जेक्ट पे गोटे भलो होबा पई आउ बड़ा डिफिकल्ट माने गोटे क्लैरिटी दरकार आ मोर निजर एक्सपीरियंस होची जे जो स्टूडेंट्स माने टिके साइंस बैकग्राउंड अछि पर्टिकुलरली साइंस बैकग्राउंड अछि कि इंजीनियर्स अछंती दे हैव जनरली डन वेरी वेल इन इकोनॉमिक्स एक्सट्रीमली वेल इन इकोनॉमिक्स आउ तमर जो माने सब मुंडिया लोक रघुराम राजन हेले सब इंजीनियर्स आसिकरी इकोनॉमिक्स करछन आम बेले खाली इकोनॉमिक्स पे इकोनॉमिक्स पढ़ुले एबे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स रे 80% होचती फिजिक्स रा इंजीनियरिंग रा ए सब्जेक्ट को हाईजैक करने चंदी इंजीनियर्स रा बुझला ना सो एनीवे बट इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट तेनो आमे we will take about 36 classes to cover the entire thing. Note karo about 36 classes during the next 3 months. नेक्स्ट 3 मंथ्स रे प्रत्येक सप्ताह रे 3-3टा क्लास करी हमें 12 वीक रे त माने बहुत कंफर्टेबल हे जिवो इकोनॉमिक्स से जो माने तुम आईएएस दउचो कि जो माने बैंकिंग दब जे कोन परीक्षा दियो तमर कंफर्ट लेवल वुड बी वेरी हाई अरे गेटिंग माय पॉइंट एम की नजर आ तुम जो किछि मते मु इकोनॉमिक्स क्लास नै जे टिके रिपीटेशन हबो टिके डोंट वेरी कारण समस्त लेट अस ऑल गो टुगेदर ताले कोन हबो ना तमरो गोटा अंडरस्टैंडिंग टा क्लियर हबो है ना सो समस्त फोटो नियो आमर कौन टा पढ़िबा हमें कौन टा में पढ़िबा देइछ तो देख पिला माने मु तुम टिके इंट्रोड्यूस कर दोची वी विल हैव 8 जा सो देयर वुड बी तमरो मोबाइल अछि बेले खोली देखो तमरो वी विल हैव 18 modules 18टा मॉड्यूल रे हमें पूरा बस कोड थिले तो सब आस बस सो हमें बस हमें 18टा मॉड्यूल रे इन 18 मॉड्यूल जार लैपटॉप जो अछि मोबाइल खोलो तमे आ मोबाइल खोल के देखा हमें 18टा मॉड्यूल रे हमें 18टा मॉड्यूल ईच मॉड्यूल आई टेक अबाउट 2 क्लासेस प्रत्येक मॉड्यूल रे there would be 2 classes हला तेनो आमे तेनो चम्मा मिस करनी कारण थरे लिंक छाडी गले तो मते ऑफ ऑनलाइन न आस ऑफलाइन आसनो तले ऑनलाइन रे रुह कारण एथरे तमे अनेक गुडे इंटरेस्टिंग कथा सब कोआ जिवो आ तमे सिउडा को सब निजे पढी के माने तमे तको अक्टर करि परिबनी डू यू हैव एनी इज देयर एनी इकोनॉमिक स्टूडेंट हियर कि अछि इकोनॉमिक्स कॉमर्स बैकग्राउंड के अछि कॉमर्स से अछि गोटे कॉमर्स अछि सो इट इज ऑल द मोर इंपोर्टेंट दैट तमे समझते ना तमे समझते आउ ठीक है सो हमें विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड माइक्रो इकोनॉमिक्स ये नोट करो मु कहू कोनटा हम माइक्रो इकोनॉमिक्स ता मु जमा तुमको काको पढेइनी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ता हमें नेक्स्ट क्लास रो मंडे रो we'll have 2 classes in microeconomics. Hello, microeconomics ता
माने गोटे इकोनॉमिक्स ता दीटा भाग रे होची गोटाला माइक्रो आ गोटाला मैक्रो आमे जनरली कॉम्पिटिटिव रे क्वेश्चंस आसुची मैक्रो रो किंतु माइक्रो रो अनेक गुडे कांसेप्ट्स you will also find in macroeconomics. Are you all getting me? तेणु तमे धर elasticity of demand हला कि substitution effect हला कि inferior good हला एवढा सब जो concepts उडा mainly microeconomics रे आछी. So I will like to cover these basic concepts in microeconomics which will be very relevant for all of you. Okay, so हमें microeconomics करिवा next week रो आरंभ करिवा हैना. मैक्रोइकोनॉमिक्स तो तुमरो एकदम ब्रेड एंड बटर तेणु तो करियो तापर नेशनल इनकम अकाउंट को चैप्टर इंपोर्टेंट तुम कहूची तमे सेरा को निहाती छिडोटे केयरफुल रहबो कारण सेथरो मैक्सिमम क्वेश्चंस आसीबो गोटला नेशनल इनकम अकाउंटिंग ते नोट करो नेशनल इनकम अकाउंटिंग एथरे तुमरो गोटे रो दीटा क्वेश्चन 100% प्रीलिम रे आसीबो आर यू गेटिंग माय पॉइंट even IAS रे OS रे एटा करे सबु बेले एथरे प्रीलिम रे क्वेश्चंस आसीबो बुझले कि तर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मींस दिस ABCD इफ द चार्टा आसीबो कि पांच चार्टा स्टेटमेंट हबो तर तमे गोटा फसी जिवो कि को स्टेटमेंट ता करेक्ट बुझले तो एथरे गोटा क्लैरिटी दरकार नेशनल इनकम इज अ वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर and माने जो वन सब इकोनॉमिक्स पाठ पढिचंती से माने भी इथे वीक अरे गटी में many students my economic students also do not want to study national income accounting माने अनेक मास्टर भी भूल पढ़ांती तो बुझलो तो कारण मु मास्टर को रिक्रूट करे तो प्रोफेसर लेवल पर्यंत मु रिक्रूट करे तुम ताको पचारला कि जान दबो जे से जानिनी भल किरी हैला planning in India, please note down planning in India and Niti Aayog. एटा उपरे में बहुत क्वेश्चन आसीबो. Planning in India आ जो नीति आयोग हमर अछि ता उपरे जिते प्रीलिम न आसीबो तमरा मेन रे बेसिक क्वेश्चन आसीबो and it is a very important area. Particularly note करो the comparison between the earlier planning commission and present नीति आयोग. ठीक है मन रखो एटा बुझलो तो जो पुराना जो नीति प्लानिंग कमीशन थला 2015 पर्यंत 2016 रो हमर नीति आयोग हला बुझ पड़छ तो 1950 मसिया रे प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया 1950 प्लीज नोट डाउन 1950 2016 रे प्लानिंग कमीशन को गुड बाय करी से बिल्डिंग रे वर्तमान हमें नीति आयोग हेछि ओके So many people don't understand जे ये जो चेंज हला एटा भलो हला कि खराब हला कि कोन तरह अछि so this is a very tricky subject normally कोन हुए समस्त भाबिबे हम प्लानिंग कमीशन गला तो गला कोन किंतु तमे भाबनी सेटा गला बोली क्वेश्चन आसीबे से क्वेश्चन आसीबो 12th प्लान ऊपर क्वेश्चन आसीबो प्लानिंग रो ऑब्जेक्टिव्स कोन थिला कोन पे प्लानिंग कमीशन गला ए जो नुवा नीति आयोग हला so गोटे जिनस नोट करो तुम ये जो आंसर जो कंपैरेटिव क्वेश्चंस आसीबो तुम आंसर शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव प्लीज नोट डाउन इट शुड बी ऑब्जेक्टिव माने इट शुड बी फैक्चुअल माने हमें देखिए हमें डेमोन्स्ट्रेट करिया पड़ियो आंसर रे जे हाउ इट इज बेटर और हाउ इट इज इंफीरियर दिस इज extremely important. In economics, we have to demonstrate. If you are saying that this is better, then you have to say why it is better. Are you all following me? So objectivity is very important. There are history jimti कोई टीपू सुल्तान ऊपर नुआ बही बाहरी विक्रम संपत्र लिखो विक्रम संपत्र टीपू सुल्तान ऊपर कोई बही बाहरी विक्रम संपत से लेक्चर दी से सावरकर दे लेख तबे अनेक समय कोन आसीबो एडा सब तमर प्रीलिम्स रे एडा क्वेश्चन आसीबो तबे जानछो टीपू सुल्तान का नाम सुनिछो टीपू सुल्तान सो टीपू सुल्तान को किछ लोग कहंदी जे से होची एकमात्र लोक जे कि ब्रिटिशर्स संगे वेरी वैलिएंटली से फाइट करतला ब्रिटिशर्स संगे एंड ही लेट डाउन हिज लाइफ सो ही इज कंसीडर्ड टू बी ए ग्रेट वॉरियर ऑफ इंडिया
किंतु आउ गोटे अल्टरनेटिव ओपिनियन होची जे ही वाज a Hindu hater. So अनेक हिंदूज को बहुत टॉर्चर करिछि, बहुत एक्सप्लॉइट करिछि. So there are two different viewpoints. One viewpoint says that he was a great freedom fighter. He laid his life fighting the British. Almost 9 years पर्यंत Britain could not occupy Mysore. Mysore was the only state they couldn't occupy. They lost in 3 wars. So Vikram Sampatra जो बही रे, it is a very objective account. से कहूची कौन पे से कहूची जे टीपू सुल्तान रो assessment कर. So economics it is very important to be objective. And सेहित पे हमको data दरकार. Are you getting my point? So in economics we need data, we need logic to explain. जे एहित पे होची. So therefore planning in India, money and banking. Please note down, money and banking is an important chapter. आमे एहित रे mostly आमे देखिबा monetary policy. How the RBI functions, please note down, this is very important. How the RBI functions, RBI role kono. So this is a very, very important chapter. Amar actually, BA podthulu, MA podthulu, this was a paper for us. This was a paper for us. But I am going to short a paper, honors re, money and banking was a paper. Money and banking was a paper. Sir, please repeat money and banking. Money and banking is कौन पढ़ेगा? Repeat. Sir, money and banking रे हमें will try to understand the role of money. Banking रे we will understand the role of Reserve Bank and the role of commercial banks. Both Reserve Bank and commercial banks. Anchor role in the economy. Monetary policy, which is driven by the Reserve Bank. We have a fiscal policy, which is driven by the finance minister. So, ame both monetary policy or fiscal policy, data, inflation and targeting. Please note down, this is a very, very important chapter. Inflation and targeting. Inflation targeting mane, so the inflation boruchi, how do we contain it? How do we control it? Because dardam jodi bahut badibo, tale sarkar devali habo, vote chali jibo. So inflation and targeting is an important chapter. Apan lekha international organizations. International organization hala amara International Monetary Fund, World Bank, or World Trade Organization. Eita tamara main tamko preliminary opportunity question asibo, even main re asibo. Eta basically factual questions. It's not a difficult chapter. Are you getting my point? Eraka descriptive issues, international organization, but tamara awareness darkar. तो अवेयरनेस दरकार. वर्ल्ड बैंक टा कोन, WTO टा कोन, GATT टा कोन. Are you getting my point? So you should have very clear idea of international organizations. But these are not difficult chapters. Poverty, please note down, poverty, inequality, and employment. Extremely, extremely important. Poverty, inequality, and employment. Mane aji desare, the biggest challenge that we have is how to provide employment, please note down, and skilling. And skilling. If you really ask me, what is the biggest challenge for India? I would say 3. Please note down 3 things. A tinta kotha tamane gotala unemployment, gotala skill, outla manufacturing. Please note down manufacturing. Not industry, manufacturing. Manufacturing provides maximum employment. जो देश manufacturing रे खूब भलो करूची, से देश गुड़ाक पृथ्वी रे दादा बेले अछत. Can you tell me which are the 5 global manufacturing countries of the world? China, USA. USA is not a manufacturing powerhouse. Please, so
मने मने तमे जदि अमर्त्य सेन हबो भारी असुविधा हबो बुझले कि जापान अरे मते कंफ्यूज करो ना तमे सब नोबेल प्राइज तुमको दे दो तो नोबेल प्राइज पठा देबा धीरे धीरे का चलो गोटाला नोट करो फर्स्ट ला चाइना चाइना इज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब तार केते शेयर वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग रे कहितली काली नाही 23% को 28%. 23% कहितली 17 किन दे गला 25 17 किन दे गला 23. 23 टा 17 किन दे गला ताको बसुट करा ताको 17 थर बसुट करा 23 मने पड़छ ना नहीं काली कथा सो चाइना नंबर 2 हला साउथ कोरिया जापान आउ को साउथ कोरिया Germany. Please write down Germany, South Korea. How देखो Russia. Russia. Please write down. एटा होची पांच नो देश कौन देश चाइना जापान जर्मनी साउथ कोरिया और रशिया मैन्युफैक्चरिंग हब रो कोन भाई सार एते राबुचंती मैन्युफैक्चरिंग होची एई सब देश रे प्लीज नोट डाउन एई सब देश रे जोड़ा मैन्युफैक्चरिंग हां एई सब देश रे प्लीज नोट डाउन जो देश गुड़ा का मैन्युफैक्चरिंग हब जो उनको कहे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब तांकर बैलेंस ऑफ ट्रेड इज पॉजिटिव कौन ये स्टेटमेंट रो माने कौन मोर स्टेटमेंट माइली हाँ their export is more than import clear जो देश रे अमेरिका रो बैलेंस ऑफ ट्रेड होची -4% ऑफ जीडीपी हला -4% of their GDP whereas for China it is +4% of GDP. Have you understood the difference? किम टाइम माड़ा खाला देखले तो यूएसए भाव यूएसए is the dada in services. Please note down. In the service sector, consultancy, IT, all kinds of services, they are the world leaders. Absolutely nobody comes anywhere near them. It is the services hub of the world. Consultancy, सबु जिते बुद्धिर सबु पेंठा सबु सब ट्रम्प पाखरे अछि बुझलो तो से सब रखि गोटे विवेक नारायण को से करछि गोटे इंडियन टा करछि त बयस केते जानि छ गोटे एलन मस्क का विवेक को से करछि जे हां से विवेक रो बयस केते जानि छ 38 इयर्स से तमर पिला सेठी अमेरिका रो पाठ पढि करी सी इज ओनली 38 से फार्मास्यूटिकल सेक्टर रे काम करी प्राय $500 million से प्रॉफिट करुछि यंग गाय आर यू गेटिंग माय पॉइंट सो टुडे USA is not a manufacturing hub so all countries that I have told are having balance of trade surplus their export is more than their import please remember this बुझि पड़छो तो now you understand how objectivity is to be determined okay so poverty inequality employment तापर तुम मन रखो हमें गोटे स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्लीज नोट डाउन स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी हमें पढ़िबा स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एगुड़ाक सब है गप बुझे कि ये जो कहली सब गप सब conceptual issues poverty unemployment inequality और सब conceptual issue तापरे हम आसीबा स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्लीज नोट डाउन स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी
एठी असला हमर इकोनॉमिक सर्वे ए डॉक्यूमेंट तमे filmin.nic.in रे पाइबो filmin.nic.in एटा होची फाइनेंस मिनिस्ट्री वेबसाइट बुझिलो तो सो कौन कहले so economic survey, please note down, economic survey is released by the finance ministry before the budget, before the budget is passed. Economic survey is the health card of the economy. Doctor pakhku jibo se कहबो जे तुमको ज्वर हेछि कि नाही. It is the health card of the country. Are you all getting me? So economic survey document 100% तमनको prelim ପାଇଁ chapter 1 टा पढियो पढियो. Please note down, first पढियो पढियो chapter 1 टा. There is no escape. जदि तमे prelim का पाई गलो main रे तापर से 25 पेज पर आकु जो पढियो. ट्रेन सीट अटकी बने ताको आकु जो पढियो. तुमको सिस्टमैटिकली आई एम ट्राइंग यू टू नेविगेट थ्रू द एंटायर थिंग बुझलो तो एटा कष्ट कामटा कष्ट किंतु काम परे तमे हे जीवो कलेक्टर कामटा हे गले 2 वर्ष भितरे इट विल टेक यू 2 इयर्स माने इट इज डिफिकल्ट टू गेट थ्रू इन अ इयर्स टाइम माने सम ऑफ यू मे गेट थ्रू बट यदि मो कथा मानि के तुम पढिले ताको प्रैक्टिस कलो आंसर कलो तले पाई जीवो किछ असुविधा नाही प्रिलिम तो पाई जीवो मेन रे ऊपर डिपेंड करछि केते तमे कोन करछो डिपेंड करछि किंतु इकोनॉमिक सर्वे यू हैव टू ऑल रीड वेरी केयरफुली तो प्रथम देखिया हमें स्टेट ऑफ द इकोनॉमी माने टोटल इकोनॉमी एटा हमें 3-4टा 2टा क्लास पर पढियो आस्ता कोन होछि इंडियन इकोनॉमी रे सेठी हमें देखिबा डेटा सेट्स ओडा देखिबा वी विल सी द डेटा सेट्स प्लीज नोट डाउन डेटा सेट्स एंड डेटा सोर्स डेटा सेट्स and data source कोठु नेला सर आपण कोठु एगो सब मानचंती so first thing in UPSC or OS they will ask you कि एटा कोठु डाटा टा आनिछ से कहबो सर मो मोबाइल करली अरे मोबाइल रे कोठी को सोर्स रो आनिला are you all getting me source is extremely important को सोर्स रो आछि खाली छवि कर देला होबनी. So any data, please remember, any data in economic survey is the authentic data. जितने गुटे तमे prelim रे question आसीबो database रे आसीबो सब आसीबो based on economic survey. Please remember, तमे मने जो नाही से मु 6.2 पढितली जदी economic survey 6.3 अछि तो 6.3. Are you all getting me? It is the authentic official source. Please remember. तमे को नाही सर एसएन मिश्र सर मते कहथिले एसएन मिश्र को चटकना मारो एसएन मिश्र कहले हबनी इट हैज टू कम फ्रॉम ए सोर्स को सोर्स नु सर पाइले मु थरे एमते गोटे जो कि हमर बड़ डायरेक्टर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पुलिन ना कासले मु कह सर एडा सब कोठु कथा कहउचंती जो डाटा उडा कहउचंती कोठु कहउचंती तमे विश्वास करन ताका पार्टी खनखन हे गला कहले नो नो मु कह सर सुनी कि हबनी सर मते कोन तो सोर्स का मु कोन हम भूत कहउचंती सोर्स ता कहंतु पानी पी गले से कहले अच्छा हो ताले मु अन्य कथा कहउची करे आर यू ऑल गेटिंग मी सो मेनी पीपल फॉर इन गोटे टीवी डिबेट रे कनक टीवी डिबेट रे बजट ऊपर चलथिला से छंती कोन हम जो कोन तंगा नाटा से थिले फाइनेंस मिनिस्टर थिले बुझला तो मु ताकू जानि 55 कानून गोबडी बुढा लोगटे पश्चिम पाखरे सेटू मनोरंजन मते पचारला सेटू मनोरंजन तांको पचारला तापर बीजेपी रे गोटे थिला तापर मु लास्ट रे बसतली एमते जगह ठगट मारी के बसची मते केही जान नांती 55 जानचंती ना आज बीजेपी रे गोटे जेट थिला जानचंती मु बसची ओडिसा सो 95 गोटे बहुत क्रिटिसाइज करी कहले मु जानि सो ये 55 कानून को किए कोन सरा मु कहली 95 ए जो कथा आपण कहले एटा कोठा आनिले सर आपण को किछि इकोनॉमिक्स करिसंती ना कोठो से तकर कहले मु कहली सर ए डाटा बडा कोठो आपण पाइले
कोठी खजाना गोटे थिले आपण खोजिक आनले से कहले नाई प्रोफेसर मु कहली कोठो आनले सती कहंतु से कनक टीवी रे जे थिला जे मनोरंजन थिला से मो कान्यासी कहूची सर से फाइनेंस मिनिस्टर थिले सेठो से कहला नहीं नहीं बंद होची तापर जेबी भी टीवी रे आसंती से कहले सत्य आपण प्रथमे कहंतु तापर मु कहबी माने सो मेनी टीवी चैनल्स बुझले त मु सब चैनल जाउतली डीडी फिटा मत डाकिलेनी कारण एउडा को सेमती मार खायो बोली बताओ डाकंते बुझले की anyway I go also to the TV channel but what I want to tell you this is very important this is extremely important आजी जे ट्रेन में जाउची से निर्मला सीतारमण तो बेसी कथा जानि छी सब देशर सॉल्यूशन ता पाकर अछि से को एमिति कले अनएम्प्लॉयमेंट कमी जाता every body opinion except निर्मला सीतारमण अरे से फाइनेंस मिनिस्टर अछि बाबू से स्त्री लोगटा हेले कोन से फाइनेंस मिनिस्टर अछि 4-5 वर्ष फाइनेंस मिनिस्टर अछि कोन निर्मला एमिति कहि दरा अरे निर्मला कहला जे निर्मला फाइनेंस मिनिस्टर अछि 12 घंटा काम करछि दिन को अरे आर यू फॉलो मी so you can make statements about many subjects but when it comes to economics unfortunately in India the non-economists talk about economics more than the economists भारत एक देश जो भी non-economists speak about economics with greater confidence than economics fellows कौन कथा बुझले कि तेणु मते से माने ओडिसा रे विभिन्न जगह डाकंती कहती होउछन ओडिसा रो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट बोली मते डाकंती बुझले कि मु जतरे कोई भी इकोनॉमिक्स केही मो संगे झगड़ा ना जुक्ति किछि नाही केवल गोटे लोक एटी अछि जहार इकोनॉमिक्स नाम अछि जुगल महापात्र से चीफ सेक्रेटरी थिला से मो 2 वर्ष जूनियर से दिल्ली स्कूल में पढ़ता से गोटे पिला टिके अर्थनीति जानि छी बाकी ठीक ज्ञान नाही मैं मजा कहूनी मैंने कथा लोक भावुँ जेटा एमती कले एमती देशरा पूरा हो सब आउ लोन ठीक होता एते इन्फ्लेशन हेगानी जान कितने इन्फ्लेशन हेगानी अबे इन्फ्लेशन ना कौन इन्फ्लेशन माने कौन रिटेल इन्फ्लेशन माने कौन नॉन कोर इन्फ्लेशन माने कौन गला से फुसेला कौन कथा बुझो तो आर यू ऑल फॉलोइंग मी कौन एटा एते ड्राई सब्जेक्ट ट्रेन में मते जाउथली बालेश्वर जाउथली गोटे भाषण मारिया पे से तो से कहूची जो रेपो रेटा शक्तिकांत दास ता कमेलानी काई तांके भीतर चल चुक्ति मु के लगे आपण किए सी एफएम करे मु को सब्जेक्ट ना एंथ्रोपोलॉजी रे मु के लगे रेपो रेट माने कोन रेपो रेट कोन ता माने ता कोन ता फुल फॉर्म कोन मु के आपण शक्तिकांत दास ता को एमती धुलाई करजोंदी ट्रेन रे आंथ्रोपोलॉजी लोक आपण असरपा देखिया लोक जमी देखिया लोक खोलिया लोक आपण कोन तो नहीं कि मारू ताको मारू जंदी सत्यकांत दास को कहउछने भलो कलानी बोली डू यू अंडरस्टैंड ऑल दिस व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस इन सच अ लाइटर वेन टू ऑल ऑफ यू दैट इश्यूज इन इकोनॉमिक्स आर वेरी सीरियस ओके सो व्हेन वी स्पीक अबाउट इकोनॉमिक इश्यूज वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट the data आमर बहुत फार्मर सुसाइड होची देशटा एकदम डूबी जाईची बुझलो त अरे कोनटा देशटा काहेंगे डूबी गला सा मद बिगिरी खाली सला लोन करचंती पूरा डूबी जीवो ए जो कालिया स्कीम ता हैची पूरा बाजे स्कीम मु कहली सर काहेंगे कोन असुविधा हला कालिया रे आपको कोन कालिया स्कीम असुविधा हला मते कहले सर ना सर मैजिक स्कीम ता एकदम बाजे स्कीम सो आर यू फॉलोइंग मी So when you become, please remember why I am saying this, as a civil servant, you will be asked to check facts. Please note down. When your secretary will call you, when your minister will call you, they will say, अरे टिके बतेले डाटा टा कौन कोठी अछि कले टिके बाहर कले डेटा बाहर कले your work your job is to look out for it. So economic survey, please note down, economic survey is the most important document for you, is the most important document for you for data. Are you all getting me? As NSSO, National Sample Survey Organization,
NSO, National Survey Organization. बुझलो तो आम देश रे गोटे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अछि बुझलो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन रो काम हला नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन थ्रू रे डेटा कलेक्शन करिवे अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट about inflation. So please remember, NSO data is the most important source of data. अच्छा incidentally जो economic survey जो अछि प्लानिंग कमिशन एटा कलेक्ट करूनी कि फाइनेंस से माने डिफरेंट मिनिस्ट्री कलेक्ट करछ. प्लीज रिमेंबर, आर यू ऑल गेटिंग मी? इकोनॉमिक सर्वे इज अ डॉक्यूमेंट prepared by the finance ministry based on data from different ministries. तर एग्रीकल्चर ऊपर से माने डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्टैटिस्टिक्स रो डेटा लेबे. प्लीज नोट डाउन एग्रीकल्चर हेले डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्टैटिस्टिक्स से टू डेटा नेबे. इंडस्ट्री वाला मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री रो डेटा नेबे हला. कॉमर्स डेटा ट्रेड डेटा गुडा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रो आसीबो. एमन के थुळेबे थुळे हार करिवे मल्ली हार करिवे मल्ली हार ये ताकर मल्ली से बार ना मल्ली हार करिवो से डिपार्टमेंट बुझले तो. मु तो प्रथम जॉइन कली फाइनेंस मिनिस्ट्री रे मु इकोनॉमिक सर्वे रे जॉइन कली 77 मसिया रे. मते जमा 21 वर्ष आइता. मु कहली सर ये डाटा तो भर्ती छि सरा फाइल ऊपर फाइल सरा क्वाड से कंप्यूटर फोटो किछि नथिला माने राता राती से डेटा पढ़ी ताकू सरा प्लॉटिंग करी माने एक ह्यूज अफेयर से तबे सब एक्सेल फैक्चर एवा किछि नथिला. माने मोर मने अछि फर्स्ट कंप्यूटर केम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी 1977. बड़ा सिंपल रिग्रेशन करिया पे मते सरा टाइम मिलला राती 11 रे क्यों लागि छि. सिंपल डेटा जोटा आधा घंटा में नहीं परियो तो सकाळ 6 रे सेटा मोर सॉल्यूशन हला माने in 1977. What I'm trying to tell you that you live in a far more technically savvy world. माने एकदम एंड बाज जाउछि. लैपटॉप थिले भलो गोटे मोबाइल थिले तो मैक्सिमम काम हे जाउछि. सो इकोनॉमिक सर्वे रे प्लीज नोट डाउन आमे एग्रीकल्चर पढिबा ए सेक्टरडा पढिबा इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस एक्सटर्नल सेक्टर के मन रखो एडा कटिके हमर इकोनॉमिक सर्वे प्लीज नोट आमे पढिबा एग्रीकल्चर टा पढिबा इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पढिबा सर्विसेस पढिबा एक्सटर्नल सेक्टर पढ़िबा तापर में पढ़िबा सर्विसेस सेक्टर ए चारटा सेक्टर पढ़िबा बुझलो तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस एक्सटर्नल सेक्टर हला बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट. प्लीज नोट डाउन ए चारिटा इंपोर्टेंट चैप्टर हमें पढ़िबा. तमे थर प्रीलिम पाइला परे किंतु तथापि मु तुम हां Sir, what is the common difference between National Survey Organization and Economic Survey? Economic survey is collecting data from different organizations. National Sample Survey Organization provides data on unemployment and inflation. The finance ministry. बुझिए ना तो the inflation data की unemployment data economic survey लिखिए को चाहूँ that data they will get from the National Sample Survey Organization. Is that clear? Clear है ना? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, हाँ sir, one question for me. So हाँ the हाँ yes sir yes madam. the logo of RBI represents the palm tree and tiger or palm tree or lion? Say again. Say again. The logo of RBI. The logo of RBI represents Work of the palm tree RBI. and the logo of RBI. नहीं ओडिया को आरबीआई रे कौन कहू आरबीआई रे कौन हला RBI रे जो लोगोटा अछि हां हां शक्तिकांत दास ना नहीं सर जो लोगो अछि लोगो हां कौन हला बिटो हां
सेटा सर पाम ट्री टाइगर हबो ना पाम ट्री लाइन हबो मुझे कौन लोगोटा कौन है ना कौन टा पचारती कौन टा लोगोटा विषय कौन पचारती सर से पचारुचंती लोगोरे पाम ट्री टाइगर अछि ना पाम ट्री लायन ए देखुनो तुम मोबाइल देखुनो मते कहीं पचार अरे नहीं सर सेटा समटाइम्स देखुनो इट ठीक इज है अ वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस अरे छाड़े तो कौन कौन छी तमे कौन तमे अच्छो कौन हमें अर्थनीति पढ़िबा ना लोगो पढ़िबा की कथा तमे कहू तुम माँ तुम माने तुमको नमस्कार एटू नमस्कार तो तमे पागल कर दबो तमे जो पिला को बाहा हो ताको पागल कर दो तमे 100% पागल कर दबो से पचार के आरबीआई लोगोटा कौन बोली मते पचार के आरबीआई लोगो रे हाथी अछि कि बाघ अछि बोली पचार अरे मु केमती जानिबी तू देखुनो आरबीआई टा देखुनो लोगो अरे छालो तमे बंद चुप रह बुझी पड़छ अरे सुनो ना इकोनॉमिक सर्वे इज अ समेशन ऑफ डेटा रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैला तापर में आउ गोटे बड़ इंपोर्टेंट चैप्टर अछि सेतरे ह्यूमन डेवलपमेंट प्लीज नोट डाउन ह्यूमन डेवलपमेंट प्लीज नोट डाउन is a very important chapter human development रे आमे देखिबा HDI please note down HDI GII MDPI जी कॉल तो बोय तीनटा तोर कोन पैरामीटर अछि ताको 100 टका मो देबी नेक्स्ट क्लास 1 मिनट पूरा सब कहले 100 टका पाइबो नॉल पाइबोनी कौन से पूरा कहले 100 टका ब्राह्मण लोक मु कोन एमि तुमको आराम रे दे दी पैसा टे ह्यूमन डेवलपमेंट रो तीनटा वेरी इंपोर्टेंट इंडिकेटर्स अछि ह्यूमन डेवलपमेंट माने हम देशटा केमि चाली छी सो गोटेला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एटा केबे हेइतला कते तुम काहे सुकुआर गला तुम सब कोन हेछि एनीबॉडी एल्स व्हेन HDI evolved पढैथिल तुमको की उडा सब इते बुद्धि लोग कोडा आछि 1990 कोट के 1990 নাই নাই 1998 लेख तो कोन सब हेछि तमरो Human Development Index was evolved by Professor Amartya Sen in 1998. He got the Nobel Prize in Economics because of that. सब टॉयलेट रे फ्लश से तो क्वाड थिला सब क्वाड मुंडे के रखिछ Human Development Index was developed by Professor Amartya Sen in 1998. So there कौन parameters होची education economic health कोट सब माथ में कोट आछो एरा सब कोट तुम के आसुन टिके ऑफलाइन रे आसु तुम टिके दर्शन हंता तमरो टिके हां पर फिर लेख टिके तुम अरे उठके सब आसीबो तमरो फिल्म रे पर कैपिटा इनकम लाइफ एक्सपेक्टेंसी mean years of schooling तमे जम्मा और पिला माने चगला हुओनी भलो करी पढ़े चेष्टा करो हैला एटा सब आसीबो प्रीलिम रे क्वेश्चन आसीबो कोन कोन कहली पर कैपिटा इनकम तापर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड थर्ड mean years of schooling what is the average years of schooling तम देश रे what is your average years of schooling काहे के हमें एसडीआई होचे काहे के लोगटा नोबेल प्राइज दिया गला कोई परिबो
1998 मसिया पूर्वरु आमे खाली सबु गोटे देश से कंपेयर करथिले we are comparing on the basis of growth. Please note down. Growth. केते टंका अछि, केते सेविंग अछि, केते एक्सपोर्ट अछि. Are you all getting me? We were only looking at per capita income. Please note down. Growth ठीक है लेखा साटिके हातटा चलांतो हातटा चलेले पूरा हातरे रक्त संचालन हबो ठीक है हैला हातटा ठीक चलेले हबो ग्रोथ तब लेखा डेवलपमेंट and sustainment. Growth, development and sustainment. Ela Trimurti. Brahma, Vishnu, Maheshwar. Growth, development and sustainment. Growth mane GDP growth. Paisa. बहुत पैसा आसला. Growth, economic growth. Development आमे शिक्षित आमर स्वास्थ्य भलो अछि. Are you all getting me? We have better human capability. We are as good as the Germans. We are as good as the Americans. बुझ पड़तो. Development हला human development. Sustainment हला जे आमे आजी जहा अछि 5 वर्ष परे मध्ये सेमत रहबा. So therefore we should not pollute the climate. So जो climate action जो होची हमरो जो green होची that is for sustainment. Are you all getting me? Are you all getting me? Economics is about these three: Brahma, Vishnu, Maheshwar. Brahma है किए growth. आमे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हे गलो सब 25% लोक रात्रे खाइ न खाइ कि सोचंती. Are you all getting me? आमे कहबे आमे 5th रे अछु. So 1/5 of our people are sleeping without dinner. Are you all getting me? So that is development. Are you all getting me? Gote hala growth, gotla human development, out sustainment. Sustainment kono? Sustainment hala je ame jimiti aji jaha growth hochi, kali se vaya growth hoba. एमिति हबने जे आमे माने आमे क्लाइमेट को एते दूषित कर दवा. We make the environment so polluted that the आमे कहबे जे नै मु कोन से मो पो जहाल कोन से मो कोन चिंता अछि. You cannot. So you have to think about your subsequent generation. So that is why sustainment is so important. Climate action, environment. Please note down. All of you must know. So एटा जो consciousness ता बुझी पड़तो तो ग्रोथ हला बुझी पड़तो तो ग्रोथ हमें 1997 मसिया पर्यंत खाली ग्रोथ इकोनॉमिक्स वाज ऑल अबाउट ग्रोथ. Are you all getting me? A human development index हला परे a group of economists have come up who believe that human development is more important than growth, like John Drage, like Joseph Stiglitz. So a group of economists have come who are talking more in terms of human development. Are you all getting me? तापर हम जो MDG हला मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हला और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हला जो चाली छि 2015 रु. प्लीज नोट डाउन. MDG हला 1995. प्लीज राइट डाउन. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एरा सब आसीओ फिल्म रे. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स the millennium development goal रे कहला जे poverty should be reduced by 50%. गोटे कि नोट करो एरा सब बहुत इंपोर्टेंट. You must know the major goals of MDG and SDG. Poverty should be reduced by about 50%. Infant mortality rate, please note on infant mortality rate. There कितने पिला मरी जाउछन्ती after childbirth. That should be reduced by 2/3. बुझी पड़छो माने मोटा कहूची तुमको. Maternal mortality rate लिखो MMR. MMR mortality rate. कितने मां मरी जाउछन्ती सब पिला जन्म करा बेले.
maternal mortality rate because of lack of medical care. Are you all following me? Poverty will be reduced by 50%, IMR by 2/3, and MMR by 3/4. In the Millennium Development Goals. Are you all getting me? In the SDG, please note down, in the SDG, they are saying poverty should be zero. Zero. Have you understood the difference now? How the world is moving? 1995 ରୁ 2015 पर्यंत, please note down. From 95 to 2015, ଆମେ କହୁଥିଲେ 50% poverty କମେଇବା. Infant mortality कमेगा. Now the objective is zero poverty, zero hunger, improve quality of education. Another very important thing. MDG thila, please note on MDG thila, je access and equity. Access and equity. Please note, access and equity माने समस्ते शिक्षा पाइबे. 100% access. Please note down. 100% access or 100% equity. That means there would be no discrimination between boys and girls. Now it says, how do we improve the quality? Are you all following me? आमे जेतिकी समाज आउची सेतिकी आमे सभ्य समाज हो चेष्टा करछे. आमे किंतु better society हबो. Are you all getting me? So this is what we call as sustainment. Are you all getting me? So human development chapter is a very, very important chapter. Now let us finish this SDI. SDI बुझी गलो? SDI रे कौन parameter असला? Per capita income, life expectancy, आओ जमा भूली भूली डाल. ऊपर सब बड़े क्वेश्चन आसे. क्यों नहीं सर मोटी भूल हला माने माड़ खाइबो. भूल हबनी जेमती. भूल जेमती हबनी. India score out of 1 kete कहलो? What is the score of India? Yes. नहीं amaro out of a score of 100, what is the score of India in SDI? 100 score रे बा 1 score रे kete? Kete 0 point 60% कहूचो. तो ताली मारला तो ताली मारता 66% और 6% ही बढ़ी जाइए. सर इतने कम को बाहर तो इतने कम देखा ना 66%. When you have 66%, you are considered a middle income country. Please note down. If you are having 66%, you are considered to be middle. अरे बुझी पड़छ कि नहीं मा 180 देश अच्छी 180 देश रु 60 देश होचदी मीडियम और लो डेवलप्ड जार स्कोर होची 70 पर नोट डाउन जार स्कोर होची माने 1 रे हला 0.7 बुझो तो जार स्कोर होची लेस देन 7. सो इंडिया इज अ मीडियम डेवलप्ड कंट्री. अरे बुझी पड़छ नहीं कथा. बाकी 60 देश हला डेवलप्ड कंट्री जार स्कोर हला फ्रॉम 0.7 to 0.9 70 सेन को हमें डेवलप्ड कंट्री बोली कहूचे. सेन को हमें डेवलप्ड कहूचे. जार स्कोर कहूछ सांगे कहूछ आमे वर्ल्ड को डिवाइड करूचे तीनटा कैटेगरी रे. डेवलपमेंट रे आमे तीनटा कैटेगरी डेवलप करूचे. गोटे हला मीडियम डेवलप्ड, गोटे हला डेवलप्ड आ गोटे हाईली डेवलप्ड. हाईली डेवलप्ड रो स्कोर हला 90 मार्क. अरे आर यू फॉलोइंग मी? जो माने सब हाईली डेवलप्ड कंट्री अछंती, जो माने सब हाईली डेवलप्ड कंट्री अछंती तांकर स्कोर होची देखो मीडियम डेवलप्ड, बड़ा गलत राइट. हाँ मीडियम
अच्छा ठीक है सर, ठीक, सॉरी सर, सॉरी मीडियम, डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड, in medium the score is less than 7, less than 0.7 माने 70 मार्क रु कौन 8 ହେଲା 0.7 ରୁ 0.89 এটা হচ্ছে more than 0.9 ହେଲା not the score ଆମେ जो विकसित भारत पहुंचे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड जब हम विकसित भारत पहुंचे सर आम कौन 90 चलती कि डेभलप एक प्रश्न तुम पचार बुझ तो जिते कह विकसित भारत 2030 रे अपन पचारे सर में डेभलप हवा कि हाईली डेभलप्ड हवा हैव यू अंडरस्टूड नाउ आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन राइट क्वेश्चंस हैव यू अंडरस्टूड इफ यू वांट टू बी तर जो माने हाईली डेभलप कौन पैरामीटर आसला अरे गोटे अरे तार पैरामीटर कौन आसला पर कैपिटा इनकम तापरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी तापरे हला मीन स्कूल जो माने हाईली प्लीज नोट करो एटा नोट करो तीनटा पैरामीटर हम नबा एक तीनटा पैरामीटर नबा तीनटा कंट्रीज पे तीनटा डेवलप सिचुएशन पे कौन तीनटा सिचुएशन हला मीडियम डेवलप और हाईली डेवलप एई तरह में तीनटा क्राइटेरिया नेला लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ए क्राइटेरिया किंत कोन से फिट करछ जो माने सब डेवलप्ड कंट्री अछंती तांकर पर कैपिटा इनकम इज मोर देन $20,000 per capita income is more than $20,000 अमेरिका रे 70,000 कार 75,000 हमें अमेरिका फैमिली कथा कहीं डेवलप हाईली डेवलप 20,000 ऊपर 10 डेवलप बुझे तो और लेस देन 10 हेले बुझिपाल कथा जदि $10,000 रु कम हैला ताहले तमे मीडियम डेवलपमेंट रे आसो 10 रु 20 तमे डेवलप होचो आउ $20,000 रु अधिक हाले तमे डेवलप्ड होचो हैव यू अंडरस्टूड नाउ लेट अस गो टू द अदर टू पैरामीटर्स आई वांट यू टू आंसर केते हबो लाइफ एक्सपेक्टेंसी केते हबो हाईली डेवलप जे ठीक कहबो ताकू सब गुड चॉकलेट नहीं के आसी ताले हां लाइफ एक्सपेक्टेंसी केते हितबो 85 ये तो 85 ताली मानो 85 प्लस प्लीज नोट डाउन स्कूलिंग टी कहो के तो ताली मारो तको तो ताली मारो 12 प्लस हायर सेकेंडरी बुझलो तो हैव यू अंडरस्टूड ओटा डेवलप्ड कंट्री मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग केते हबो 12 क्लास रो अधिक +2 परे सो दे आर इनटू कॉलेज दे हैव पास्ड +2 अरे बुझु तो कि नहीं 85 सर लास्ट पॉइंट कौन कहले सर सर लास्ट पॉइंट बुझा पड़लानी सर एमवाईएस को मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग हला 12 क्लास रो एवरेज क्लास हला 12 रो अधिक +2 कला परे सर समते +2 करछथि एवरेज होछन +2 ऊपर गध केही नाहंती चाकरी पाइबे सब +2 करछथि भंडारी देखतु से जो ड्राइवर सब 7 फेल 9 फेल मो पाखे जी ड्राइवर आसे मु कहू केते क्लास मु फेल चुके पास मत कहनी ना सर 6 क्लास दिथर चुंटी सब सारा मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग है तो बात आउ डेवलप्ड कोन हो गेला डेवलप्ड कोन हला केते पर कैपिटा इनकम ता केते हो हेला तो तापर एठी केते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 85 केते होचे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 85 आ मीन स्कूल ये कहि दबो ताको मु कहि बहुत बढ़िया बोली 8 to 12 8 to 11 और 8 रे केते हबो लेस देन 70
8 have around 5 to 7. Please note down. Clear है समझ ते नोट करो आमे तो कहबा जे आमे विकसित भारत बोली आमे टिके इंडिया रा फिगर टिके करबा टिके टेस्ट करबा केते विकसित अछि मोदी सर रैली रे कहउचंती ओ कोई सर टिके हमर टिके एसडीआई फिगर ओडा टिके सर कहबे कि टिके सर काइंडली कान रे कहबी सर टिके कोन तो हम एसडीआई फिगर टिके कोन तो केते फिगर हमर होची हमर व्हाट इज आवर पर कैपिटा इनकम 4,500 एते कमान देखो एते कमाना तुम एते तो कमाना भारत को 4,500 हेलो सर व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेंसी जी हां कहते 68 ठीक है 67 सर what is our mean years of schooling 5.4 पूरा ताड़ी हमें पूरा डेवलप हो जाओ नहीं पूरा मांको डेंग के हमें हाईली डेवलप हो जाओ कोड़ी तीरिस ले नहीं की अरे बुझुचो कि नहीं डाटा रो आर यू ऑल फॉलोइंग मी सो व्हेन यू स्पीक अबाउट विकसित भारत आउ डेटा ता सामने रे हला हां सर पाई वोट पाई के वोट पाइबे कि रे को सब धूलिसात हेइबे मते जने ओडिसा रु कांग्रेस पार्टी रु ठियांतु राहुल गांधी आपन को कोची हा भाई मु गली सरा मोर पिला को कहि कि सर गुरु केमति क्वेश्चन पचारछु लोगो ऊपर क्वेश्चन पचारछु सर सर को सर को मैडम सर तो पर कैपिटा इनकम इंडिया रे क्या माने इवैल्यूएट केमति ठीक है चुप गो अच्छा please all of you write down more than growth India needs to improve on its quality of education. India needs to improve on quality of education and quality of healthcare. एटा होची हमरो quality of education and quality of healthcare. They are the two major challenges before us. बुझलो तो आर यू ऑल फॉलोइंग मी एटा हम किनते पाइले एई कथाटा कोनते पाइले 95 जो बगबग होतले 95 जे देखि तांते एसडीए टा सेम ते कथा कहले तांते हमरो एसडीए तोरा हम कोन कले we will become a developed country and then we become a highly developed country. I mean, what we need to do so that our life expectancy is 80 plus, our mean years of schooling is 12, what we need to do. Are you getting me? So that is how we understand the problem. A hala tomar kon kahla human development. I would kon kahithili tumku तापरे एसडीए पर कोन कहितली जिया कोन सो पैरामीटर अछि मति कहले टिके एते जे अछ जेंडर इनइक्वालिटी एते उडे जे अछ दे कहले टिके जो जेटी कहि दबो ता पय मु बढिया गोटे परफ्यूम दे के आसी को जी कोन कंपोनेंट अछि कहले तमे सब पढैतली कोन गला तमे सब टॉयलेट रे फ्लश करी पळे आसले नी जब भी मेटे जिम तेरा ना सब टॉयलेट रे फ्लश कर दीछो reproductive health आपण मैडम आपण नोबेल प्राइज पे तना नाटे के लिखि नते ताको नोबेल प्राइज पे एथरा मोदी को गोटे जो रिपब्लिक डे रे ता पे गोटे भारत रत्न की गोटे कोन ताको पठेबा ए रतन टाटा संगरे ता गोटे अवार्ड दिया जाऊ रतन टाटा संगरे हमर ई क्लास रो मु तार नाट रेकॉर्ड करबी एमएमआर प्लीज नोट डाउन এই जो कथा सेहित पे मु कहे सब ट्रेन रे समस्त विद्वान एरा सब प्रीलिम रे आसीबो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस आर ऑल कम इन द प्रीलिम्स मु काहे की एतोडा डिटेल कहूची एउडा का सब प्रश्न आसीबो जदी जानिथिबो ठीकरी ठीक मारिबो आकु चल नहल बसी करी
सी जिंदे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहूची सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ खोजू ता तू Sir, but MMR and AFR both are अरे under reproductive health. ठीक है रह जा MMR हला मैटरनल मोर्टालिटी रेट MMR हला सुनो लिखो नंबर ऑफ डेथ पर 1 लाख ओटा भलो करे टिके मने रखो हाउ मेनी मदर्स आर डाइंग during childbirth because of medical negligence. ठीक है serious हुआ से reproductive health रे पसंद तो मैंने तमा reproductive health ही पसंद नहीं reproduction को तो सब बंचिले था reproduction हो बना तो ऐसे बंचिले reproduction हो बना बुझी पड़छो तो so MMR is maternal mortality rate per 1 lakh. Can you tell me what is भारत महान रो MMR फिगर कहते सर 50 approximately 50 some things देखो ना नहीं तेरा पाइबो 100% पाइबो एटा तब पाइबो 100% पाइबो या को अटके पिला कहीं नहीं 123 बहुत बढ़िया वेरी गुड आंसर तब ना टिके बड़ पाटे कहले टिके व्हाट इज MMR of a developed country? I'm asking you. If you can tell me next class, तुमको chocolate देंगे. What is MMR in a developed country? You try to understand the problem. Yeah. No. Less than 10. Please note down. Less than 10. Any highly developed country, MMR is less than 10. In Sweden, it is 4. Most of the countries, it is less than 10. Seriously, कौन सी गोटे मदर गोटे नेग्लिजेंस रे मरीगला माने तमे से 2 दिन आउ टेलीविजन सुनी परिबनी 95 रे when I went to England for the first time उसला टेलीविजन खोली नहीं देखिया पे गोटे कोट होड़ा स्त्री लोटा मरी जाईछि बुझले त चाइल्ड बर्थ रे मरी जाईछि next 2 days the discussion was only about this कहीं की मला कौन कला this is an ordinary lady से ये सोनिया गांधी नथिला नॉर्मल भारी से ठो जाने के डेवलप्ड कंट्री कौन अंडर डेवलप्ड कंट्री कौन द वैल्यू ऑफ लाइफ मैटर्स देयर एठी तमे वीआईपी हेले तमर वैल्यू अछि वीआईपी जति नानो कहबे सर डेरी बॉडी किसका बॉडी है are you all getting me so in developed country please remember all developed country the MMR figures are less than 10 mane both of them try to reduce it mane negligence are you getting my point it has to be very minimal we still have very high rate GI हम गोटे कोन इंडिकेटर कहले टिके हम भूली छ IMR GI रे नै कोआडे तबे किछे पढु न रे ना मु जो क्लास नला पर जम्मा पढु न किछ को कोनटा पार्टिसिपेट ताली मारे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया that means what is the percentage of women please note down what is the percentage of women who are working compared to men in India the male workforce participation is 75 75 बुझी पछो कथा and सर सेटा कोन लेक्चर फीमेल लेबर फोर्स female हला 24 female labor force participation हला 24 और male force हला 75 in China it is 75 and 71 कोटा बेटर है कि मत कहले टिके तम बॉम्बे ऑफिस रे देखियो मु जो ऑफिस रे सीडी नेवरे थिले 1200 हमर 60 600 50 most of the offices you find
almost 50-50. Jim, come here. Just see here. Are you all getting me? Female labor force participation. So one of the reasons for our underdevelopment is very low level of female force participation. Graduation करके घरे बसचोती, चुले चा दौचोती, बुझले कि कौन करिवा ससुर को गोड़ भस अरे चा देलनी मा कुआड़ गल कोठी बसी गपुच नहीं अब कौन ओडिसा रे कौन तमे सरा नवाब बेला सारी तुम चा देलनी कुआड़ गल चाटा बहुत मीठा हे छी इति ठंडा मीठा किन चा पीबी बुझते सो हमरो लेबर फोर्स पार्टी a study showed that almost 50% of women who are working at home want to work, after the child is born and all, but they are not allowed. They are not given the opportunity. So labor force participation, female labor force participation. Last caller है ना तमे गोटा निजर सम्मान टा रख टिका अछि कोन माने हेछि थर्ड पैरामीटर को व्हाट इज द थर्ड पैरामीटर को नहीं से एम्प्लॉयमेंट है फीमेल फोर्स नहीं एम्पावरमेंट सिंपल खाली गालो कथा कहले केते एम्पावरमेंट माने को representation of women in parliament. Please give her a big hand again. Representation in parliament. Representation in parliament. कौन जे नहीं कागज देखबडी सीधा मो को एमएमआर नहीं बसो आराम रे बसो एमएमआर फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन थर्ड अला in parliament. What is the percentage of women who are in parliament? Our भारत रे केते अछि representation कहलो केते 41 सीटा ताकुडा पर हां केते 33% होछि हम चाहूचे that is the reservation we are looking for. जी कहि दो एकदम माने पाखा पाखी अरे तुम ताली माने रे देखो पुओटे झियो कथा कहूची तो एपटे बसो ताके सगरे 14 very good answer whereas it is about 40 in China about 40 कौन कहला rural because they are all working in the field agricultural field 80 से agriculture नहीं so सेत में इठी से छोटो काम करचंती small occupations करचंती ठेला करचंती रोसे करचंती एडा सब करचंती but in the rural area they are working in the fields they have a predominant presence in the field धान रोया पई धान खेतर काम करचंती रोचंती so it's a good question बुझलो तो so what are the three parameters in GII अरे एथरे स्कोर इंडिया रे केते एक रे केते हा मात्र कहलो जी कहलो केते सर 123 नहीं मु पचारची आउट ऑफ ए स्कोर ऑफ 1 ठीक है भलो के सुनो द लेसर द स्कोर द बेटर किनो अरे जीआई टा जति कम होबो सेति की भलो किनो जेंडर केते हबो केते 43% आउट की कोहट के आउट के केते 30 आउट 60 केते ताकुडा पाई it is about 0.49 can we tell what would be the gender inequality index in a country like Sweden केते 3% yes तो जाइथलो कि स्वीडन जाइथलो कि give her a big hand it is 0.4 only 4% gender equality मो पुओ जाइथला स्वीडन कहला इट इज झियो मानटू माडा खाउछथि पुओ आने it is such a gender equal case Sweden very easy so जो भी देश रे जेंडर इनइक्वालिटी कम अछि
most of this country inequality is less than 10%. Please note down. Ame Bharat Mahan 59%, 50%. We are a high gender unequal country. Are you all getting me? अरे बुझो कि नहीं भारत महान पूरा विकसित भारत ही होची जीआई टा देखले बहुत विकसित होची थर्ड पैरामीटर हला कोन व्हाट इज द थर्ड पैरामीटर एमडीपीआई कोन एमडीपीआई की कहला रीना कोन आइ तमे पढी कि आछो तो नेक्स्ट तो हला पढी के आसो सब एमडीपीआई टा कोन मल्टी डायमेंशनल please note down multi-dimensional poverty index. Please note down, this is the index which is used by SDG. Sustainable Development Goal Rate, they are not looking at poverty percentage. Please note down. माने केते गरीब अछंती से देखुने सर देखुचंती poverty in different dimensions. Are you all getting me? बुझी पड़छो तमे कहयो कोडा एटा गोटे प्लान स्टेट ना गरीब पिलाटा कोन करिया गरीब कोथरे पाठ पढिनी कि तारा हेल्थ नहीं कि तारा घर नहीं प्लीज नोट डाउन देयर आर थ्री पैरामीटर्स ऑफ एमडीपीआई दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट अनेक थरा एटा प्रिलिम रे आछी अनेक थरा एटा आसीबो कोन कोन दोची तगुडा ताई मानता गुडिए एजुकेशन हेल्थ and standard of living. एजुकेशन में कौन कौन पैरामीटर आसी कही दो ताले रीना तुमको ताली मार दो एटा भलो कहलो एजुकेशन में कौन कौन देखिया बुझि पले एटा कथा ना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रे हमें तीनटा पैरामीटर होचे कौन कौन पैरामीटर होचे health, education, now standard of living. Again, each of these parameters has a different dimension. इतना mean years of schooling. तापर लिखा होची dropout rates. Please note down. It's a quality of education लिया जाओ. Dropout rates. कितने school छाड़ी चली हो जो? What is the percentage who are dropping out of education? That's a big challenge. Okay. Health please note down health IMR and MMR. See जो मैडम टी कहूतले ऑनलाइन टे कहूतले मैडम एई तरह आछी सेटा IMR और MMR ना हेल्थ रे आछी सर ड्रॉप आउट रेट आउट कोन लिखले सर एमआईएस आउट लिखली सेटा mean years of schooling mean years of schooling and dropout rates hello mean years of schooling our health IMR or MMR माने why I am saying all this to all of you कारण economics रे तमे गोली मारी पारिबोनी either you know it or you don't know it गोली मारले definitely zero बुझलो तो कथा that is why this subject जे जानि छी बढ़िया स्कोर करिवो मु 21 वर्ष रा इंडियन इकोनॉमिक्स सीरीज पाई जाइथिली माने 20 वर्ष पाई जाइथिली मु पाठ पढा पाई जाइथिली ओडिसा रा आई एम द ओनली फेलो व्हेन आई वाज डूइंग माय एमए आई गॉट इट मोर सार पाइलेनी ओ सार जे पढौतले मु सर आपण पाइबेनी से पाइलेनी मो से बसले पाइलेनी हमर सुमित मिश्र थे बैंक रे अछंती मु देखा हमके सर पाइबेनी हम बुझी पाउनंत बुझे परंती क्लास रे कथा ओडा पाइबेनी तो सतरे मु पाइबी ना पाइबिन तो पाइलेनी से कौन बुझो तो you have to be very clear in fundamentals. Are you getting me? If you know the fundamentals, the pipe, the pipe. Are you all getting 100% pipe? IMR or MMR? Standard of living देखिए हमारे कहला तो रीना कहला कौन से आसीबो? Okay, out of को बहुत बढ़िया, very good. नहीं गोटे ड्रिंकिंग वाटर कहला आउ गोटे को. So sanitation? कौन कहले बात ना? Sanitation? Sanitation, very good. Sanitation, how? Very good. How to call? Food. What?
food, नहीं आउ टिके क्लीन गोटे हला क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हला आउ गोटे कोन कहले सैनिटेशन आउ गोटे हला क्लीन फ्यूल प्लीज नोट डाउन हमर जो उजाला स्कीम अछि काहे की जे स्त्री लोक माने सब फू न करी गैस लगे तो मजा लगुची नहीं कि जाटे गाँव को देख एबे भी अधा गाँव रे स्त्री लोक माने एई काठ जळिकरी करछथि बुझिल मु तो प्रथमे क्लास नेली 2012 रे मु एमते पढुतली सेटु मु कहली पचारली गोटे पिला रे कोन टा व्हाट बरे जदि फाइनेंस मिनिस्टर कहबे जे कोन टा तोर विश ही वाज अ ट्राइबल बॉय ही सेड के सर आई विल से दैट माय मदर जिमती मो मदर जिमती गोटे गैस चुली पाइबो मुली काहे की ना सर एमती फुकी फुकी ताको टीबी हे जाइछि आई वाज सो टच्ड तुम जो कहू आज के मजा क्लीन फ्यूल तापर लेख पक्का हाउस कौन मेजर हला कौन करला सैनिटेशन हला क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बुझी पड़छ तो ए सब हेले आमे गरीब कोथरे गरीब can you tell me which is the state in India which has the lowest FDPI yeah. And which is the district which has zero MDPI Kerala Kozhikode please write down Kozhikode has zero MDPI mean all these parameters they have done well have you understood तमे जितने डेवलप्ड हे करी तमरो रोड जिते भलो हो यदि ए ह्यूमन डेवलप आर यू ऑल गेटिंग मी नाउ सो ह्यूमन डेवलपमेंट टा गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर सेहित में तुमको एटा ह्यूमन डेवलपमेंट तापर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आउ तापरे बुझी गलो तो आर यू नाउ गेटिंग अ हैंग ऑफ द होल थिंग केते गभीरता एटा खाली ट्रेलर देखा होची सिनेमा आरंभ हेई नाही ए पर्यंत चली डाबर चली लालचंद ज्वेलर्स चली खाली ए पर्यंत निर्मा वाशिंग वाटर वाशिंग पाउडर निर्मा चली ए पर्यंत सिनेमा आरंभ होनी सिनेमा आरंभ हम आर सप्ताह आर यू ऑल फॉलोइंग मी और नॉट तुमको मजा लगुच कि नहीं पाठटा ना भारी बोर होची ना ठीक अछि मजा आछि हां सर कौन सर कौन कहले एटा टिके मारदेबे कि कैमराटा मारदेबे कि देखो कौन पढ़िबो तबे कौन पढ़िबो निहाती कोइटा इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह please take the 16th edition that is the latest edition पूर्ण बही जम्मा तार नबनी ए जो तार लास्ट एडिशन ता होचे 16th एडिशन तापरे जो माने टिके मेन पाइबो you must have this book macroeconomics by Samuelson को वर्ष नोबेल प्राइज पाइथिले जे कहइबो कहते तुम सब केते 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 पखम के जानी जब इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज आरंभ वाला 69 रे ही वाज द सेकंड रेसिपिएंट 1970 इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज केबे हला प्लीज नोट डाउन 1969 प्रीलिम डे क्वेश्चन आछो को वर्ष टू नोबेल प्राइज हला इकोनॉमिक्स केबे टू 69 एमटी से तुक्का मारे को पड़िबोनी हला सैमुएलसन होचन ए जो नॉर्थ जी से भी नोबेल प्राइज पाइछि केबे 2018 में प्लीज नोट डाउन नॉर्थ ए दिटा नोबेल लॉरेट कर बही पृथ्वी रे जेते सब यूनिवर्सिटी अछि प्राय 160 टा यूनिवर्सिटी रे दिस इज अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक सैमुएलसन नॉर्दसर जो बही तार प्रथम बही ना थला इकोनॉमिक्स एबे से बहीटा ना हिची मैक्रो इकोनॉमिक्स को कथा बुझছো तो को कहलो केते फाइन हला केते के 2018 ए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स बहीटा
मैक्रो इकोनॉमिक्स बहीटा अमेरिका रे 12 क्लास रे पढ़ंती मु तले पाठ पढुतली बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स मो भाई ना पीएचडी करथले अमेरिका रो सो ही सेंट फॉर मी अ बुक ऑफ सैमुएल्सन तोटा बुद्धिया पिलाटा अछि पढिबो टिके बुझलो तो आई वाज द ओनली फेलो हु वाज रीडिंग सैमुएल्सन बुझलो तो बिकॉज़ आई स्टडीड सैमुएल्सन आई स्टूड फर्स्ट इन बीए He was such a wonderful writer. एते भलो लेखा मु तो प्रथम लॉ स्कूल आसिली कहारा जिंघन अग्रवाल मु कहले सैमुएल्सन गला कोए कहला नाही सर सेठी चुहा मन तो खाउछो जेते सा सैमुएल्सन बय अछि तळे सा चुहा खाउछो कहला very difficult बय इट्स अ extremely well written book तो जेते जदी पढु को मन पड़ो फर्स्ट चैप्टर पढियो very well written extremely I follow Samuelson I follow Samuelson very good book very well written book कोडा मु काहे कोची मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स रो समन्वय तुम आने पड़ो बुझी पड़छो यू टू ब्रिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स द थ्योरी और इंडियन इकोनॉमिक्स हला तर तुम जी सो प्रीलिम्स पाई जीवो यू मस्ट हैव दिस बुक इकोनॉमिक सर्वे बजट तो ऑलरेडी कहि सरची तापर तुम बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर टा गोटे तार तमे नहीं जाओ ए जो कोन ऐप नहीं जाओ प्लीज टेक एन ऐप ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड तार जहां एडिटोरियल बाहर केते पैसा पड़ो बहुत पैसा पड़ो कि नहीं तो नहीं नॉर्मल तो गोटे ऐप नहीं जा तार आ गोटे हिंदी ऐप नहीं जा समस्ते हिंदू समस्ते ऑल ऑफ यू टेक एन ऐप ऑफ हिंदू मन तुम नेक्स्ट वीक रो क्लास में भी मु हिंदू रो तुमको करेबी तुम हला just one article hello को सर रमेश सिंह को छड़ी के एक्चुअली मो पाखरे अन्य जण को थिला बई सिंगानिया कोन कहले सिंगानिया आज्ञा सिंगानिया होची जो सिंगानी करबे नहीं से सिंगानिया होची एटा तो इंडियन ऑथर डा को ताकर जो ना इकोनॉमिक्स जणा ना ताको इंग्लिश जणा just don't go anywhere near an Indian economics fellow I don't read them at all. Ramesh Singh is a reasonably good book. Okay. Business standard paper टा तार ऐप नहीं जीवो तबे पूछ करनी तार जो मु जहां कहि तो पढिया पे तक पढिबो हला सर हिंदू रो न्यूज़पेपर फिजिकल न्यूज़पेपर सर बोलो मु फिजिकल न्यूज़पेपर तमे बिजनेस स्टैंडर्ड नियनी जदे नबो चाहे मो गोटी पेपर नियो हिंदू हां सर हिंदू को थई कुछ मो कथा सुनो ठीक है समस्त ऑल ऑफ यू लिसन टू मी I suggest all of you take Hindu and please bring the newspaper next time to the class. What I will do, कौन से तो पढ़ियो कथा तुमको मु कहि देबी तुम तो पढ़ी के आस्तिबो हला तापर हम सेटा डिस्कशन करिया हिंदू जहां इकोनॉमिक्स पेपर आछि सेटा पढ़ी के आस्तिबो आर यू ऑल गेटिंग मी माने हमर देश विषय जहां बाहर छी हिंदू रे रीड दैट आ ताकुटे नोट कर रखतो जति न बुझी परिबो को सारा बुझा गलानी कोन सारी ज्ञान पेलुची किछि बुझियो नै सारे ज्ञानटा किछि जानि हो नै सारे एटा कोन ज्ञान दउची से बुझलो तो मु तो पढि के आछि मोर काम किछि नै दिन का 6टा पेपर पढुची बसिगिरी बुझले कि मोर काम किछि नै खाली पढिवा चा पीवा नेटफ्लिक्स देखियो आ किछि नै गीत सुनिबा आ किछि नै नथिंग एल्स कुछ कथा आई हैव नो अदर वर्क एब्सोल्युटली नो अदर वर्क कि फोन कले घटे धरबी तापरे हिंदू तो तुम माने किनि दियो हला हिंदू आइदर तुम ऐप नियो और तुम फिजिकली पैसा पत्र अछि ना नहीं अछि ना ना नहीं मु देबिनी 100% मु देबिनी मु दरमा पाउनी मु चाकरी करनी मोर पैसा पत्र नहीं हला हिंदू Please note down economic and political weekly तो main पाई जीवो read specific articles of economic political weekly जी तुम्हारे IAS तरफ पाई चो economic political weekly would be very useful. This is the best weekly in the country. More economic जब तुम्हारे economic political weekly तुम उटे article बाहरी गला ताल तुमको कहवा दरकार नहीं जे तुमने कौन करूचो कोठी I have 4 articles in Economic Political Weekly after 6 years of effort. After 6 years of effort, only 4 articles are there.
but in the whole state university, I'm the only one who is having an article there. Seti paisa dela habari. Unless your quality, article quality is very, very good, it will not come out. Today, economic political because my articles are so good now. Are you getting me? They are very, very good. Quality is very, very good. तमने जो माने सुटी पाइबो मेन पाइबो है ना सेही तरह जो स्पेसिफिक आर्टिकल ना वो कहि दिबे तोटी पढ दो ताको ना रेपोर्ट किसी बाहर ची जहां पढी बिजनेस स्टैंडर्ड रे बिजनेस स्टैंडर्ड रो एडिटोरियल और हिंदू इंडो एडिटोरियल तमे पढिबो इफ यू वांट टू रियली डू वेल हिंदू रो एडिटोरियल आउ बिजनेस स्टैंडर्ड एडिटोरियल ए दिटा टिके पढिबो पढ ताको तो कहो सर सोइबा में केबे आपण तो हमको इकोनॉमिक्स रे ही 6 घंटा कर देबे तापरे लास्ट हला इकोनॉमिस्ट हला इकोनॉमिस्ट मध्ये बहुत बहुत भलो मैगजीन माने वर्ल्ड रो सबुठु नंबर 1 मैगजीन 1963 मसरे मुतले बाणीबार आसिली इकोनॉमिक्स मैगजीन देखिली मु किछ कोन है मैगजीन टा माने इट्स एन आउटस्टैंडिंग मैगजीन तो मन रखो तार गोटे ऐप पेज गो बेसी पड़ियो रे तार जो लीड आर्टिकल ता खाली पढ़ दो प्रत्येक इशू रो द लीड आर्टिकल आर यू ऑल गेटिंग मी गुड पेज रे से प्रत्येक इशू रो जो प्रत्येक वीक रो जोटा सबटु मोस्ट इंपोर्टेंट रे ट्रम्प जितला नेक्स्ट इशू रे इकोनॉमिस्ट विल कम आउट विथ एन एडिटोरियल just read that editorial nothing else have you understood तम माने जो माने टिके भलो क्वालिटी रे लिखिया पई चाहूचो ओके सो जस्ट टेक द ऐप ऑफ इकोनॉमिस्ट नहीं जातो बेसी दाम होबनी इन एनी केस तमे बुझी पड़छ मो कथा ना नहीं तमे ना ना बुझी परनो सब बुझुचो भाबुचो सा ये कोन हम करे बचिची हमर सळे ये आज हमें देखिबा कौन हेडलाइन है हिंदू रे हला मु एटा कहबार सब हला टेक अ पिक्चर ऑफ सो वी विल गो टू योर काहे कि इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंट तमे एठु बतन जानिमो हला एक हेडलाइन कौन हेडलाइन दाउची प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ यू नोट डाउन आज पेपर रे बोथ हिंदू आउ बिजनेस स्टैंडर्ड रो हेडलाइन होची रिटेल इन्फ्लेशन ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन रिटेल इन्फ्लेशन रिटेल इन्फ्लेशन कौन है रिटेल इन्फ्लेशन ब्रीचेस आरबीआई थ्रेशोल्ड of 6%. Please note down. इस तरह का प्रथम पेज दउची जो आरबीआई पे दियाची जे 6% रु अधिका हबो नाही प्लीज नोट डाउन भारत रे अछि जे हमर इन्फ्लेशन रो सीपीआई रो थ्रेशोल्ड होची केते 4 रु 6 4 प्लस माइनस 2 मैंने 2 रु 6 पर्यंत आर यू ऑल फॉलोइंग मी व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेंज इन इंडिया 6%. एटा क्यों डिसाइड कला मैडम कहितले एडा सब मने अछि को कमिटी मॉनेटरी पॉलिसी की को कमिटी रे रेकमेंड करथला जे कहबो से पाइबो आएस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी अरे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को कुआइछि कि 2 रु 6 रखियो बोली ना ना को सब भूली गला हैं सब कुआड़ सब गला सब कुआड़ अर्जुन कृष्ण वाला सब कुआड़ गला सब मुह तळु करके होची उर्जित पटेल कमिटी आसीबो क्वेश्चन प्रीलिम रे which committee recommended 4+2 plus minus 2 50,000 पिला जो परीक्षा देते 5टी पिला ही आनी थिबे फिर तुम जानिले गोटे मार रखिबो आ टॉप 10 रहिबो हैव यू अंडरस्टूड हाउ यू गो टू द टॉप बुझले कि मैडम उर्जित पटेल
ए उर्जित पटेल आरबीआई रो गवर्नर थिला मोदी संगे झगड़ा है छाड़ी के चली गला झगड़ा है चली गला गुजु चली गला तार यूनिवर्सिटी उर्जित पटेल कमिटी किंतु आंसर टा हम मत कहलो किंतु पाउच बुझुछो किंतु प्रश्न किंतु पाउच तमे आईएएस पाउच बुझुछो तो कथा उर्जित पटेल कमिटी खाली 4 to 6 कला हबनी एमपीसी तमे जो सेइटा को एमपीसी को दिया जायछि प्लीज नोट डाउन उर्जित पटेल कमिटी रो मैंडेट तो भूल कहूना Urjit Patel committee's mandate has been given to the monetary policy जे तमरो काम हला इन्फ्लेशन टा को 2 ରୁ 6 भीतर रखो अरे आर यू फॉलोइंग मी और नॉट आर यू ऑल फॉलोइंग मी और नॉट एमपीसी कोड ता घर नहीं आस नथला ताको देछि उर्जित पटेल कमिटी सब कमिटी रिकमेंडेशन देछि जे इट शुड बी बिटवीन 4 ± 2 हला सीएसओ कहूची सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ कहूची जे सार सार आपनकर अक्टोबर रे 6.2 हेची घंटी बाजलानी सार सार घंटी बाजलानी बाय इलेक्शन रे कहबो सार 6 रु अधिक आलानी सार आपन कोन एमते एते भाषण नरचंती इन्फ्लेशन इज मोर देन 6 सो इट इज द हेडलाइन तो के पढितला जीटा के पढितलाटा किंतु मुंडटा हलाउची नाही पढिनी भारी बढ़िया कली नेक्स्ट टाइम पढ़ी के आसीबो हिंदू टाको डोंट रीड मेनी थिंग्स जस्ट रीड हिंदू जस्ट रीड द मेन आइटम ऑन इकोनॉमिक्स बुझो तो कथा इकोनॉमिक्स देखिबो एटल देखो जे कष्ट कथा कहली कि सर हिंदूटा केमिते पढिबा ଟିକେ कहि देबे सर अरे पढिबो आखिरे पढिबो कोन किमिति पढी किमिति हबो मते एमते मनता तुम काली मु कहबी किमिति पढिबो तुम पाखरे एकुटे हले कहबी हला एनीवे करिया म आनमी आर थोर पेपरटा नेकी आसीबी तो पढाई देबे केमिति करियो तो पूरा बुझे देबी सब बुझे देबी हला सब बुझे देबी किछि व्यस्त होनी तबे खाली पेपरटा नेकी आसीबो तो नेक्स्ट टाइम हला नेक्स्ट वीक रे समते दिने से जो कथाटा पचारछि किछि भूल पचारछि इट इज वेरी डिफिकल्ट हाउ टू रीड ए पेपर तमे दि पेपरटा पढि तो पूरा दिन रात चली जो जेतरे कोन सा लिखिछि कोन करिछि सा बोर हेकरी मणि चलिबो मते एग्जैक्टली 2 घंटे में 6टा पेपर पढ़ दिए मैक्सिमम 2 आवर्स कारण मु जानि कि कोटा मोर पढियार दरकार आई डोंट गेट इनटू मोर स्पोर्ट्स पेज ताटी पढिबा पढि हला सो एई जो कहला सो दिस सो व्हाट इज द इशू टुडे इशू इज इन्फ्लेशन इज मोर देन द हेडलाइन तापर को होची सितंबर केते थिला 0.5 एई जो 6.2 हेची तार मुख्य कारण कौन व्हाट इज मेन रीजन साथी देखो तो ये 9.9 थिला अगस्त रे सेटा 10.8 प्लीज नोट डाउन एथि पई गोटे इकोनॉमिक्स रो मास्टर दरकार जदि एटा बाहर छी लेट मी एक्सप्लेन टू देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ डू यू अंडरस्टैंड द इशू जो कहला जो पचारला मते किमिति पढिबा नाउ आई विल टेल यू हाउ टू अंडरस्टैंड इट आर यू गेटिंग माय पॉइंट फर्स्ट कथा हला जे इन्फ्लेशन प्लीज नोट डाउन इन्फ्लेशन has 2 components food and non-food core and non-core A B तापरे हमें होची आउ गुड लिखो अर्बन रूरल all of you please pay attention to this आमे थोड़े inflation कथा कहूचे we need to analyze inflation in 3 aspects please note down आमे थोड़े inflation कहूचे inflation रो दीटा भाग होची गोटे हला food component आउटला non food component जोटा खाउचो रुटी खाउचो ब्रेड खाउचो चावल खाउचो दाली पे खाउचो वेजिटेबल खाउचो फ्रूट खाउचो दिस इज द फूड कंपोनेंट प्लीज नोट डाउन फूड अकाउंट्स फॉर 49% of the total expenditure on food
टोटल एक्सपेंडिचर तुम जो अच्छी इंडिया रे आवर स्पेंडिंग ऑन फूड इज ऑलमोस्ट 50%. आमर जो बुझु तो क्लोथिंग अच्छी, fuel अच्छी, वो सब अच्छी. कौन कौन अच्छी? फूड अच्छी, क्लोथिंग अच्छी, तापरे कोटा तापरे योर हाँ तमरो एवरा सब अच्छी. सो fuel अच्छी, तमरो क्लोथिंग अच्छी, एवरा सब so food accounts for 49% in India. Can you tell me what would be the component of food in a country like US? Take a guess. बुझी पड़छ मोर क्वेश्चन टा एठी जदि गोटे लोक 6000 टका पाउची कैजुअल टा पाउची से केते खर्च करची almost 60% he is spending on food, but a middle class family almost spends 35 to 40% on food. बुझी पड़छ in the US it is just 20%. Have you understood? But a developed country re expenditure on food for a poor man, for a middle class person is only 20%. जदि $2,000 पाउची से जमा $400 खर्च करुची food. In India, out of $4,000, people are spending $2,000. बुझी पड़छ? So food is the most important component. And what is the finding here? What is the finding here? The food inflation is 10.8%. Have you understood? Have you understood or not? Inflation is 6.2%, but what is most disquieting is that the food inflation is up to 10%. See, the food rate, dekho, food rate, please note down, vegetable prices are up by 42%. Please note down. आमे ऊपर तौल जीवा बुझी पड़छ तो प्रथम हला इन्फ्लेशन हला 6.2 फूड इन्फ्लेशन केते हला परसेंट केते बढ़ची about 10%. Out of those food inflation, vegetable price has gone up by 42%. This is the major source which is contributing to food inflation. दाम तमे जाउनो तो बैग मारिकरी मु जाउची प्रतिदिन जाउची परिया पत्र आनिया पे बीन काली थबो 60 टका से कहबो सर आज 120 टका बीन 200 टका हिच लोक आजकल बीन खाउ नांती जो न आधा किलो नउतले से 200 250 नउचती जत्ते सब भलो परिवा मध्यवित्त लोक माने किनी पर नांती मु जेतु लाख टका पेंशन पाउची नले स्त्री टू गाड़ी खाइबे कहले काहे की बीनटा आणलानी बीनटा कम काहे आणलो से काहे बुझिबो सरा काहे दाम पड़ची कोन बुझु तो कथा फूड प्राइसेस have जो vegetable prices, so please note down tale vegetable prices have gone up, so the government needs to do something to bring down the vegetable prices. Are you all getting me? सरकार कहबनी कोन करबी सर भेंडी न मिलला भेंडी दाम बढ़िबो ओनियन नहीं ओनियन दाम बढ़िबो सेमती कहले वोट पाइबो. Are you all getting me? It is the responsibility. Are you all getting me? It is the responsibility of the government to see that these prices come down. तापरे कोठे fruits कते oil and fats तापरे 27 so जो इची सब global prices मध्ये 27 बढ़ी छला food non food बुझी गला तो so the main increase in the food items तापर कौन कहली core and non core. Core inflation होची it includes food and energy. Please note down in एवडा का सबु प्लेन में आसीबो. What is core inflation? अरे बुझी पड़छो नहीं इन्फ्लेशन रो दीटा कंपोनेंट रोची गोटे हला कोर इन्फ्लेशन आ गोटे हला नॉन कोर इन्फ्लेशन. नॉन कोर इन्फ्लेशन काहे तो कहउची जे कहि दो मु कहबी कोन पे नॉन कोर कहउची रेना टे कहले टिके नॉन कोर और कोर विथ डिफरेंस ता कोन जे कहबो रो 1000 टका पाइबो सब. यस
से कौन से आगे से आगे हाथ टेकिसी आगे हाथ टेकिसी कौन से हां को अरे सिंपल गालुआ कथा कहनी को कोर और नॉन कोर डिफरेंस राउंड को core or non-core. Why? What in which kind of inflation will be known as core inflation? What would be known as non-core? तो आगुर चलो से को सार को तो नहीं सिम्पली उड़े गालुआ कथा ला एकदम गालुआ कथा को non-core inflation. Please note down non-core inflation. हला food और energy prices. भलो करी नोट करो आसीबो सार आसीबो सो प्रिलिमिनरी आईएएस रे एरा सब आए प्रिलिमिनरी आसीबो तुम जो भाबुछ मन माने बादाम खाई कि सब आंसर करतो सेम तो हबनी नॉन कोर इन्फ्लेशन हला फूड एंड एनर्जी जो प्राइसेस रे तमरो कंट्रोल नहीं दैट इज कॉल्ड नॉन कोर प्लीज नोट डाउन दैट इन्फ्लेशन ऑन व्हिच दैट इन्फ्लेशन नोट कर दो सर दैट इन्फ्लेशन which is not subject to control. अरे बाइक कौन मिल ठीक है जदि सेठू सुना इराक से $65 जगह $90 करू तुम कौन करिवो मोदी कह मु फोन कर दी कमी जीव हेबो आर यू ऑल गेटिंग मी आर यू ऑल गेटिंग मी non-core inflation is that inflation which is beyond the control of the government. What are the items which is beyond the control of the government? Vegetables, fruits and energy. बाकी जितने बड़े जिनिस अच्छी these are all subject to controls. Cement दाम ये सब control ले पाएगा. Steel दाम ये सब control ले पाएगा. Government can control them. Sugar, चावल some all these things can be controlled, but you cannot control the price of oil. Are you getting me? For commerce student, right? Sir, एगुड़ा को सब डिपेंड करे कंट्री टू कंट्री जेमति कि मु भी कहबी मिडिल ईस्ट रे तो सेमान पे मे बी नॉन कोर हबनी ऑयल टा नहीं माने it's a good answer what I'm saying that non core inflation I'm talking in the context of India. In the context of India जो जिंस गुडा करे हमरो कंट्रोल नहीं प्राइसेस ऊपर कंट्रोल नहीं those are considered to be non-core. Yes, in the Middle East countries, obviously it is not a non-core inflation. Core inflation hala joda kar hame control achi. So please note down, core inflation in India is only 3.8%. So inflation ta core hochi mainly non-core re. Are you all getting me? Are bujhla ki nahi? Have you understood? केडी छोट कथाटा केते घाटा केते माडी लाइन पे लाउछ तो कोटे इनोकुआ स्टेटमेंट हमें मारिले जे इन्फ्लेशन ता 6 रु अधिक आइछ किंतु आमे भितर को बजार को देखा से बहुत कथा ता भितर अछि आर यू ऑल फॉलोइंग मी विल गिव आई विल समराइज इट तापरे कोर नॉन कोर थर्ड वन कहली अर्बन और रूरल when we are talking of inflation is it affecting rural and urban areas in a similar or differently? कौन differently है ला? कौन डाला? Please note down. And what about urban? कौन सी ऐसी बातें अच्छी? बुझियोला ए जो छप तो प्लीज राइट डाउन वन पारा ताले नु जानिमो ताले गोटे मॉडल आंसर क्वेश्चन ता हला retail inflation in India has breached the ideal upper limit of 6%. Please bring out the reasons and Sir, ideal upper limit, what, sir? of 6%.
retail inflation has breached the ideal limit of 6%. Please bring out the reasons and suggest remedial measures. And suggest remedial measures. एटा गोटे क्वेश्चन हबर तमरा मेन पाई मु तुमको गोटे दौनी लिखिया पे मु तुमको गोटे आंसर कहि दोछु बर्तमान तल तमे जानिमो केमते गोटे आंसर करबो Have you all understood? Have you all understood? Lekho. As per the and suggest the remedial measures. What a well, put a non-food component. Non-food na? Food or non-food hela gote distinction. Gote core non-core hela gote rural urban hela. Ame tinita different dimensions ame inflation dekho. Okay, just I'll give you a model answer. Okay, tal tum bujibo gote economics loko kemti lekhuchi a gote amar jo tile tamar finance minister pancharna o kemti lekhuchi. तमे तो आंसर टा लिखिबो पिलाने मन रखो तुम खाता रे आसीबो मो पखु बुझ तो खाता रे मो पखु आसीबो मु जानि दिबिटा अनाडीटा कि यार किछि दम अछि सी खाता टा देखि कि तमे जानि देबेटा इकोनॉमिक्स लोक लिखिछि कि नॉन इकोनॉमिक्स लोक लिखिछि तापर इकोनॉमिक्स लोकटा सा भलो जानिछि ना एमते आलुआटा गोटे आराम रे जानि दबो माने मोटू केही मु कहा को 6 रो अधिया देरी 10 मो प खाता आसले मु 6 रो तो अधिया खाउते मारी कंजूसी करे now let me give an answer. Next same answer. As per the Central Statistical Organization, the Consumer Price Index. Sir, please repeat. As per the Central Statistical Organization, the Consumer Price Index has gone up from 5.5% in September to 6.2%. 6.2% in October, colon, thereby breaching, B-R-E-A-C-H-E-D, thereby breaching the threshold of 6% recommended by the Urjit Patel Committee. Recommended by the Urjit Patel Committee. Sir, threshold by? The Urjit Patel Committee, by the Urjit Patel Committee, which is also the mandate to the monetary policy, which is also the mandate okay, given to the Monetary Policy Committee of the RBI. Full stop. On closure examination, it reveals that the main cause, So, on closer examination, it is revealed that the food inflation, the main cause of inflation, is attributable to
food inflation, which constitutes nearly 48% of total household expenditure. Total household expenditure, full stop. The main components of price increase in food, The main components of increase in food, the main cause of food is the main component of increase in food. Food 42% is 42%. अरे कोड गला सेटा देखला आसला टिके के कोइ परिबो तमे आसा एटी सब छुई असुविधा कोठी कोन हबो किछे वो कहि हाँ 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 ठीक एटा बता या बस हाँ कौन लिख लो food prices 42%, comma oil and fats 9.5%. Full stop. There is also a disparity between rural and urban areas. There is also a marginal disparity. There is also a marginal disparity of inflation in rural and urban areas. Colon 9.7% and 11%. Full stop. While the core inflation, which excludes the food and energy products, is around 3.8%. The government needs to Sir, food and energy products is 3%, 3.8%, comma, the government needs to take effective steps. Government needs to take effective measures to improve the supply chain management.
supply chain management of items, colon, particularly vegetables, where the government can create fair, can create a market to sell them, in government outlets, at reasonable rates. এটা বুঝিয়ে দিই তোকে, বুঝিয়ে দিই। However, last line, however, the implication of this high retail inflation, rate of retail inflation is that the repo rate, which will be decided in December, Sir, high rate of retail inflation. कौन लिख लो? Because of the December 2024 is unlikely to be reduced. From 6.5%. Hello. If you give this answer, you will get 9 out of 10. Now, everything else you have understood. The last two para sentences you have not understood. बाकी सब जने पढ़ो, तुम प्रथम पढ़ो, स्टार्ट करो। प्रथम सब बुझी गलो। लास्ट पारा जो थरे मु सजेशन देछि, कौन देछि? कि गवर्नमेंट बड़ा पार्टी को sir, what is the challenge today? The challenge today is that how to bring down the vegetable prices. Kim the vegetable prices habo? So say to suggest karichi je government kon karibo na fair market market rate or fair price shop kari ei vegetables udako bikhi. Tota many states are doing this. Hyderabad they are doing it. Many states what they do, government को नाई कौन करी सर फुलकोबी दाम यदि 100 टका हला मु कौन टा करी। सो गवर्नमेंट कौन करिवो ना माने सो फार्मर्स मान को से कोबी नहीं के आसगिरी रीजनेबल रेट रे तबो ता माने गोटा सप्लाई चेन मैनेजमेंट रा हमरो गंडुला हेउछ। सडनली तो कोबी उडा कम ही जाई ना। कौन लिखसी सेंटेंस पढ़ो। सो व्हाट इज द सजेशन? The government can create fair market to sell them and publish that in a reasonable. It hala tar suggestion किंतु तापर लास्ट रे कोन लिखली यार implication ता कोन होची जे हमर जो रेपो रेट जो होची सेतरे रेपो रेट इज लिंक टू इन्फ्लेशन। रेपो रेट ता लिंक टू इन्फ्लेशन। जेतले इन्फ्लेशन ता बढुची रेपो रेट ता आउ कमे बेनिस माने केबे। When repo rate is, when inflation is coming down, they will bring down the repo rate. बुझी पड़छो तो? Try to understand this. बुझी पड़ले नहीं कथा टा, ठीक है? नोट करो तुम्हें। ये जो repo rate टा अच्छी, ठीक है? नोट करो प्लीज। repo rate जो अच्छी, repo rate टा कौन? ये repo rate टा RBI दोची, बैंक को दोची। Short term requirement पाई। ये टा अच्छी बर्तमान 6.5%. जेतेबेले इन्फ्लेशन ता 6 रु अधिका होची सरकार रेपो रेट कमी होगी। अरे तमरले इंजन ता गरम होची तमे आउल गाटो जोर चलेबो की ना पानी देबो बुझु तो कथा। सो जेतु तमरा इन्फ्लेशन ता 6.2 अछि
ताले जो डिसेंबर रे एटा एटा बड़े जो बड़े कि कमेबो कमेबो कमेले इन्फ्लेशन टा बढ़ियो नहीं अरे if your inflation is more than 6%, will the repo rate come down or repo rate would be increased? Should be Repo could be increased. it should be increased or remain where it is. Have you understood? Say kotha boli. Have you understood clearly? All of you have understood? सर बुझियलानी सर बुझिए inflation जो repo rate हलो होची the rate at which the RBI is giving short-term loans to the banks. जदि inflation बेसी होची से रेट टा कमेले कौन होबो ताले आउर inflation बढ़िबो ना नहीं अरे जेति के inflation टा बढ़िले ता संगे तुमे कहू अरे ठीक अछि आउ तू खा ना खाऊ नो कि रसगुल्ला आउटी खा सर बुझु तो सो दैट इज द implication केमते लागला आंसर टा केम लागला एमिति मस्त आंसर कले हां 9 रु 10 मिलिबो नहरे कहि छु भूल कर कहि तारे भूल कहि छु द implication कहितली कोन लगल पढलो द लास्ट कहलो द however the implication would be is unlikely to be reduced unlikely to be reduced मु likely कहतली सब भूल गेला unlikely ना सर से likely लिखि छु तारा कहला सर सार को गोटे चैलेंज करा देबो ओ कोन unlikely to be it is very unlikely that the repo rate would be एति कि तमे लिखिले 10 रु 9 पाइ ता नहले लड्डू रु 2 जाए मार्कास बल तमे दि पढि कि जो हिंदूटा पढितो आज एते हिंदूटा पढि दबो मुई जो कथा सब कहू हिंदू रु कहू ए जोड़ा मोर ज्ञान नाही ए ज्ञान सर पाइली से हिंदू रु पाइली बुझलो तो हैव यू अंडरस्टूड सर गोटे कथा भाबुथिली कहया पे कौन सर सर जदि हमर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जोटा कि बेसिकली अनऑर्गेनाइज वे रे अछि सेटा भी ऑर्गेनाइज करा जाय कारण जणा नै जे क्यों को माने केते पैसा माने इन माने माने जो सप्लाई रे रोचे मझरे केते पैसा से माने मार्क नै जाउछन जोडे ऑर्गेनाइज अछि सेही हिसाब रे जो ताको लाइसेंस वाइज कि एती पैसा रे 8 आइटम ऊपर एती पैसा अपन नै पारिबे ले मे भी समस्त को सेटा माने सोइला बळा जिंस हे परियो मे भी रूरल अर्बन बहुत बढ़िया सो देयर आर टू सॉल्यूशंस गोटे हला हमर इन द एफसीआई गोडाउन्स वी हैव मेनी टाइम्स केप्ट दिस आइटम्स आलू हला प्याज हला टमाटो हला मेनी ऑफ दिस आइटम्स नॉन पेरिशेबल आइटम्स सो व्हाट द गवर्नमेंट डज गवर्नमेंट कैन रिलीज दोस आइटम्स तर आलू दाम बहुत बढ़ी जाउची तमरो एफसीआर जे स्टॉक अछि गवर्नमेंट विल रिलीज दैट किंतु जोडा नाही मूला नाही फुलकोबी नाही कोट रिलीज करिवो सो सेइतरे जहा अछि सेटा को हमें सो द सप्लाई चेन मैनेजमेंट ता बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट कथा होची जे सप्लाई चेन मैनेजमेंट टुडे इज विथ द प्राइवेट सेक्टर से कोन होची जो तमरो बड़ बड़िया लोक रहिला तार ट्रक जाइकरी गरीब फार्मर टू 12 टंका रे कोबी किनुची तमको बिउची 60 टंका रे बाकी से 30 टंका से 25 टंका खाउची जेतेबे टिके सप्लाई कम होची से ताकू 12 टंका ही दोची तो तमको से 80 टंका रे बिकुची आर यू गेटिंग मी पॉइंट ब्लैक मार्केटिंग कोन होची आर यू ऑल गेटिंग मी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट टी नोट करो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो भलो प्रश्न पचाला सप्लाई चेन मैनेजमेंट ता कोन there is a farmer so try to understand it's a bhalo question pachala supply chain management there is a farmer there is a mandi and there is a consumer hela farmer is either giving it to the mandi and from the mandi it is coming to the consumer. Please note down. Farmer is giving it to the mandi and from the mandi there are wholesalers
they are giving to retail people to sell it to you. Farmer can also go to the market directly and sell to the consumer. Are you getting my point? There are two things. मंडी रे जो मोटा मोटा जिनस चाउल गहम ए सब मंडी को जाउछि. Please try to understand. Non-perishable items go to the mandi, but perishable items are coming to the market directly. Have you understood? Now, what is happening? The farmer, आओ ता भितर गोटे मिडल मैन रोच. ए मिडल मैन पाखरे बुझो तो ट्रक अछि. से ट्रक टारे से जिनस आनिके कंज्यूमर को बिकुछि. किछि हला से माने बारंगर को साइकिल रे कोबी आनिकरी मार्केट को आछंती. एसएन मिश्र ताकू किनुछि. ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट से आसला तार 40 किलो कोबी हला सकाळ से तार चलिवा से चली गला. दिस इज अ सिंपल सप्लाई मैनेजमेंट. जोठी मेजर रिक्वायरमेंट अछि सेठी फार्मर पाखरे से जो साइकिल आस परिबनी तार जिनसोडा की आणुची ट्रक रे. The middleman is breaking. Are you all getting me? So typically in India, if the cauliflower, the farmers are ताको दोची 12 टका दोची तो हमको बिकुची 60 टका रे. Are you getting my point? या भितरे जो तार जो खर्च आला तार 10 टका खर्च आला 22 टका खर्च आला से प्राय 25 टका चळु करूची. Are you understanding? In India, the problem is twofold. Please note down. The problem is twofold. आम तो एग्रीकल्चर को जीवा इश्यू रे आसीबा. आमर इंडिया रे प्रॉब्लम हैला फर्स्ट को थाला आम पाखरे एनफ कोल्ड स्टोरेज नहीं. प्लीज नोट डाउन. कोल्ड स्टोरेज नहीं. Absence of cold chains. आमर जहां कोल्ड चेन्स अच्छी that is only taking care of 50% of your non-perishable items. किछि टमाटर होची तुम देखियो किछि टमाटर मिलुची 3-4 मास परे भी मिलुची किंतु भेंडी वाला सजना साग वाला सब पोटे वाला सब कोल्ड चेन रे रहुनी. In the US, just to take an example, 95% of the vegetables are in cold chains. Wastage hoji kete only 5%. Are you all following me? In the US, in the developed countries, 95% of the items are in the cold chain. So, जितने सर्टेज कोल्ड चेन तो बाहर कर दे देले. एप्पल दे देले, कमला दे देले. भारत रे एते कोल्ड चेन्स नहीं. So this is one of the biggest challenges for us. How to build cold chains, more cold chains. So our wastage of vegetables, please note our vegetable in India is around 30 to 40%. Wastage of food item is around 30 to 40%, whereas it is less than 5% in developed countries. अरे बुझुचो कि नहीं 100 किलो कोबी यदि आनिला तो तार बिक्री ना 3-4 दिन तार 40-50 किलो कोबी सेमती फोपाडला टमाटो फोपाडला कोल्ड चेन नहीं बुझ पड़छो तो ता संगरे तार ये साधन नहीं ट्रक नहीं कि जो थरे के से जिनसोडा आने के मार्केट को आसी परिबो तो ताकू झुळुची किए मिडल से मिडलमैन को सरकार ए मिडलमैन जागृति सरकार जाइकरी से फार्मर मान को 15 टका देकरी आमको 30 टका बिक परियो कि नहीं. This is the solution. Have you understood? Have you all understood the situation? Yes. That is, have you understood? Our objective should be how to cut out the middleman. Please note down. The whole idea of mandi
was to cut down the middleman. Please note down. A mandi ସେଇଥିରେ middleman ମାନଙ୍କୁ ଆମେ cut out କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ in India ପୁରା ଏତେ ପାଜି ଏତେ ବଦମାସ they have also taken charge of mandis କାରଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ଅଛି ଆରେ ବୁଝୁ କି ନାହିଁ ଆରେ ମଣ୍ଡିଟା ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛି କିଏ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ନା ଏଇ ଦେଶରେ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ତା ପାଖରେ ଟ୍ରକ୍ ଅଛି ତା ପାଖରେ ମସଲ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ନେଇକି ସେ ମଣ୍ଡିକୁ ଆଣିଲା मंडी को आने की तुमको आर्टिफिशियली हाई रेट रे दउची अरे फार्मर को कम पैसा दउची और कंज्यूमर मान को शोषण करूची ए जो कोरियन थिले वर्गीस कोरियन जो मिल्क रिवॉल्यूशन व्हाट डिड ही डू कोरियन नाटा सुनुचे कि नहीं जो इंडिया रे जो व्हाइट रिवॉल्यूशन हेतला से कला कोंडा से देखला जो खीरटा को 10 टका फार्मर को नहीं ए मिडलमैन माने लोक को बिकुते 30 टका रे से निजी जाइकरी फार्मर पाखु गला क्षीर प्यूरिटी टेस्ट कला तांकू दला 15 टका आ तमुठु आला 20 टका फार्मर 5 टका अधिका पाइला आउ कंज्यूमर कम दाम रे किणला बुझ पड़छो तो हैव यू अंडरस्टूड द मैकेनिज्म ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट आम देश रे बिगेस्ट कौन दिते प्रॉब्लम गोटेला प्लीज नोट ऑन मिडलमैन एंड absence of cold chains adequate are you all getting me चलो गोटे क्वेश्चन तुम आंसर लिखो ठीक है देखो पहले एटा बुझी पड़ले ना please suggest remedial measures please suggest remedial measures please suggest remedial measures to check abnormal prices sir abnormal prices की prices sir abnormal prices from consumers and low prices being given to farmers बुझलो एटा टिके लेखो तबे 100 टा की 150 वाटर लेखो मु जतबेला 76 रे 77 रे गोटे 77 रे जतबेला मु प्रोफेशनल हिसाब रे उदयपुर जाइथिली राजस्थान उदयपुर जाइथिली जयपुर जाइथिली जयपुर जगह अच्छी तानो अच्छे सांगनेर प्रिंट्स जो मतलब सब जियो पिला थोड़ी च सांगनेर प्रिंट्स कॉटन साड़ी अच्छे सांगनेर प्रिंट्स राजस्थान रो पचारिबो के दुकान रे सांगनेर प्रिंट्स सो जे आमे सो प्रोफेशनल जाइथिलु सो कलेक्टर के संगे से कहले तमे टिके सांगनेर प्रिंट साड़ी नबो की आमे कहलु हां नबा आमे गलु मोर एबे भी मन अछि सेठी सब माने जिमता हमर पीपल ले देखियो चांदवा करचंती सेठ सब बसिकिरी स्त्री लोक माने सब सांगनेर प्रिंट्स करचंती माने कॉटन ऊपर तोटा टिपिकल सब जिमते त बांधानी करचंती जानथिबो सेमती सांगनेर प्रिंट्स करचंती मोर एबे भी मन अछि 115 टंका रे आमे साड़ी मु किनथिली मोर 5 भौणी आ 2 भाउजों पई 7टी साड़ी मु किनथिली से साड़ी एबे भी जगह पाखर अछि तापर मते पचारले से कहले जे यही शाड़ीटा केते दाम रे बिक्री होतो दिल्ली रे से पचारले हम पचारले तुम कह जे जो 115 टका तुम लला एठू एईटा केते टंका रे बिकुथुवा एई स्त्रीलोकटी आ दिल्ली रे केते रेट रे बिक्री होतो सेठू मु कहली फार्मर माने पाउथबे 100 टका खंडे पाउथबे आ दिल्ली रे हेतिबो प्राय 170 टका से कहते दी लेडीज गेट ओनली 80 रुपीस and it is sold at 300 rupees in Delhi. Are you all getting me? किए खाउची सारा पैसा उडा का आदानी अंबानी सब खाइ के लूट करछु किछि दान कंट्रीब्यूशन नाही बुझी परछो तो दिस इज द चैलेंज ऑफ दिस कंट्री बुझी पारलो अर्थनीति कोन बुझलो तो अर्थनीति किते भितरे जीव पडुची ताल एटा लिखियो त छोटो लाइन एटा आंसर ता वेरी सिंपल आंसर टी लिखा एटा
So we'll meet on Friday. ये पढ़ी के आसीबो मु तुमको एटा ट्रम्प रो ऊपर कहबी ट्रम्प रो इंप्लिकेशन ऑफ ट्रम्प्स विक्ट्री समता आसीबो हला फ्राइडे थिबो ना नाही आसीबो तो भल लागुची क्लास रे ना एटी कष्ट लागुची ना सर भल लाଗୁଛି कष्ट तो टिके हबरे कष्ट ଟିକେ हेले ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। कष्ट अछि नाही कष्ट आउ कोन यार नाउ Sir, voice audible होनी. Sir, sound ଆସୁନି. Sir, voice audible होनी.